So hello and welcome everyone. This is one of the most important video for all the January 26 qualified chartered accountant. इस वीडियो में we are going to be discussing about why very less companies are coming in the campus. With this also I'm going to be giving you some pro tips to edge your campus. And also we are going to be discussing a lot of common queries which you guys have regarding your campus placements, regarding your shortlisting, कि कौन सी companies कैसे shortlist करेगी और कितनी कंपनीज ने पास्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, व्हाट हैज बीन द हाईएस्ट पैकेज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज वी विल बी कवरिंग दिस इन दिस वीडियो. Now, before we move forward, right, 2-3 important things. Number one, please to check all the important links in the description. Right, I'll be showing you multiple files which are there. That is number one. Number two, right, if you have not joined our January 26 community group, please join the same because a lot of important updates and the vacancy we keep on posting out there. Now, before I move forward, right, this is your fourth campus shortlisting, which you got see it on my screen very clearly, where you got only 33 companies or 33 places where the names have been mentioned out. Although this list was issued by the campus on 15th of March 2026. Now, when we see the second list, which is out on 17th of March 2026, the companies has been reduced to increased to 67 companies, which is there. Now, one of the great analysis I would love to give it to you. Right, this is the analysis for the companies till now. Right, and I have done a short analysis for you guys. I'll just zoom in so that the people can see it out. When you see the list of companies which is there, right, so what you will be able to observe is, of course, in total, if we see in total how many companies have just filled out the form, right, just let me zoom out. 45 companies have just filled out the form, where you can see the count here. Right, 45 companies have filled out the form by as of now. The companies have decided to register. So the first question lies is, will the companies increase in this list? क्या ये companies बढ़ेगी क्या इस list में? The answer is yes. Sir, how you can be so confident on the same? Because guys, please understand, I'm into this industry for last 5 years, and if you don't trust me, you can trust the statistics which is there. So what the hell is this statistics? Very important statistics for all of you guys, which is there. So this is the campus round which is there. I have a list for last 10 years. This is your 64th campus placements. Right, तो last 10 campus का list है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. You will be just sharing with you guys. Attempt, campus period, and of course the companies participated, guys. So every campus में approximately 150 145 campus मोटा मोटी तो आती ही है, which is there. So as of now you have around 45 companies, so 400 more companies to be add on. Sir, but अभी तो campus का cut off date आ गया. नहीं बेटा, आपका cut off date आ गया ना, but companies can come anytime, which is there. Because I have also seen many of the companies also come on the last day. So that should not be a problem for a company. You just focus on your preparation. What is not in your control is the companies which is there. Okay, so that is the first thing which I just want to show you. Second thing, if you could see, right, when I filter some of the companies which is there. So when we go to this campus list, and what I'll be doing, I'll just putting a filter on the companies other than the one which is there. So if you could see the list of companies, right, there are only few companies which is coming around how many companies? Around 12 companies are coming more than two centers, right, which is there. तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ companies center में कहीं पे ज़्यादा है, right? तो that is something which is a good part on that front. In talking about the center wise, now a lot of students, those who have already filled out a form, had this regret कि sir, I did a mistake. अहमदाबाद में ज़्यादा companies आ रही है जयपुर से और हैदराबाद से. So this is very wrong sir. This is cheating sir. ये तो गलत हो रहा है. Sir, मुंबई में क्या companies आएगी कि नहीं आएगी? कौन से parameter पे shortlisting होगी? We'll be discussing on that front also. Right, because a shortlisting is one of the very important parameter which everybody is scared of. Right, so let me just complete one of the very important question कि sir shortlisting होगी कैसे? Right, so let us understand how the shortlisting will happen. Now the shortlisting is purely based on the location or center you choose. Sir, I'm still confused which center to choose. अभी मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे डाउट है कि क्या करना चाहिए, which is there. If the option allows, or if those who have not filled out a form, one thing I can just help you out with, right? I have the list of centers which comes to every year, right? Of course, you can take a snapshot of the same. It's a very long list which is there. But on an average, if you could see, right, this is mota moti the list which is there on an average from the last few years. So this is based on the different centers. You have to just take a pause and you have to take a snapshot of this which is there. ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, इसको स्नैपशॉट देख के आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग विच इज द बेस्ट. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद. नंबर 2, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन थिंक ऑफ लोकेशन. यू हैव टू वर्क इनटू व्हिच इज देयर. बच्चा बोलता है लोकेशन भी सब चलेगा, कंपनी कहां ज्यादा आएगी वो बताओ. देखो बेटा, अभी तक के जो लिस्ट है उसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूं व्हिच इज देयर. राइट, नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हिच कंपनीज विल बी कमिंग इन द व्हिच सेंटर, राइट, बिकॉज इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन व्हिच कंपनीज आर रेडी टू पे द मनी इन द ICAI कैंपस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पेड वर्क, राइट. तो दैट इज वन थिंग. सर, तो मेरा शॉर्टलिस्टिंग किस पे डिपेंडेंट होगा? देखो बेटा, योर शॉर्टलिस्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोकेशन विच यू हैव चोजन, विच इज देयर.
Number two, it is also going to be a basis of your attempts, right? कि how many attempts you have taken in your journey. Sir, which attempts inter के final के foundation के? Generally from my experience, right, 80 to 90% of companies are going to be considering your final attempts, except few of the companies, जैसे कि some companies are very particular about inter attempts, तो वो रहता है. बाकी otherwise 90% of the companies consider your final attempts. Sir, with attempts I have one more query. Sir, क्या मैं झूठ बोल दूं attempts के लिए? राइट, क्या शुड आई लाई इन द कैंपस फॉर्म और वेर एवर आई एम गेटिंग एन ऑफ कैंपस ऑल्सो शुड आई फेक माई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? देखिए बेटा, आपको मतलब इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि व्हेन यू फेक योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कंपनीज गेट टू नो फ्रॉम योर एज. कंपनीज आर नॉट रॉन्ग, राइट? कंपनीज गलत नहीं है आपके अटेम्प्ट्स पूछने में, बट अगेन राइट, दिस शुड नॉट ओनली बी अ शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर, दे शुड शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द स्किल सेट्स, द माइंडसेट व्हिच इज देयर. बंदे में दम है तो हायर करो भाई, बंदे में टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग है तो हायर करो, राइट? अटेम्प्ट इज वन ऑफ द पैरामीटर, बट इट शुड नॉट बी द ओनली पैरामीटर व्हिच इज देयर. दैट इज व्हाट आई शुड से. But yes, of course, if you fake your number of attempts, company will start when was your articleship over, और company will see when did you give your IPCC examination, तो वहां से काउंट करेंगे. मान लीजिए आपका एज 25 है, तो HR बोलेगी कि यार 21 में तो CA बनते हैं, 4 into 2, 2 is 8 attempts. अब तो एग्जाम 3 बार कर दिए तो कोई HR भाई पागल ना हो जाए 12 attempts गिन ले. तो ये भी एक चीज होती है, when you fake your attempts, HR get to know that you are lying your attempts which is there, and that comes as a part of a rejection indirectly, or HR says their favorite dialogue will get back to you. So that is one thing which is going to be a part of a journey. Number 3, of course, your articleship is going to be one of the very interesting parameter based on which your shortlisting will happen, right? Which includes your name, partners, and location, which is there. So a lot of companies will be putting a filter on number of partners you have or the name from your due to your articleship. Also, it is very important to showcase your client and sectors, right? Which clients you have worked into, which sector you worked into, FMCG, automotive, real estate, right? ये भी एक parameters हो जाता है, marks हो जाता है, expected city से रहता है, but it's very less which is there. So this all are going to be a parameter for you guys to be a part of a shortlisting. Sir, I have one more queries and doubts which is there. Sir, ये तो हो गया सबसे पहले कि shortlisting क्या रहेगा, but the now question comes is कि sir, I'm working really hard, right? What is going to be my scenario in a campus placement? देखो, campus is a added advantage which is there. And this time the ICAI have separated 2 team, right? पहले क्या होता था, CMIB team होती थी और campus की team होती थी. मतलब पहले CMIB के अंदर आता था, IB के अंदर ही आता था, which is there. Now ICAI this year what they decided, they split this campus placements team and CMIB team which is there, right? तो if you could see it out, इस बार से team और ये सब चीजें अलग हो चुकी है, right? तो placement is now separate vertical which ICAI have decided. Hopefully मुझे लगता है इस बार काम अच्छा होना चाहिए because of course the chairman is very active. Number 2, right, इन्होंने टीम अलग कर ली है, तो क्या फोकस रहेगा कि एक प्लेसमेंट की अलग टीम है, CMIB की अलग टीम है, which is there. But again, let's see, let's hope for the best. But this is the number of students who qualified in the campus, and this is the number of jobs accepted by the people in the campus which is there. And of course, last year का last attempt का I would say 16.5% campus के लोगों का placement, मतलब 16.5% of the people got placed by campus. But it might be because of the interview preparation, it might be because of companies less participation, and whatever can be the reason. Highest package was 32 point this, and of course we do not have got as of now the average salary package which is there. फिर ये लिस्ट कहाँ से मिली है, कहाँ से मिलेगा? बेटा बड़ा ही सिंपल है, राइट? यू कैन गो टू ICAIcampusplacements.org. व्हेन यू गो हियर, राइट, इट इज देयर इन द ब्रोशर. ये डेटा मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ दादा, राइट? ये डेटा यहाँ पे ही लिखा हुआ है इन द ब्रोशर इटसेल्फ. व्हेन यू गो इट आउट हियर, ये यहीं पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ जॉब्स एक्सेप्टेड इन द लास्ट कैंपस, राइट? तो व्हाटएवर हैज बीन रिटन आउट हियर, आई एम शोइंग यू दैट ओनली, राइट? चलो ग्रेट. But of course, this is the consolidated data, so you'll get an idea, and of course, you can see which all companies have offered the highest CTC and the highest packages in the respective campus. So that is one of the red flag which is there. So please campus का preparation थोड़ा सा ढंग से करेंगे, which is there. Of course, shortlisting आएगी, लोगों को आएगी, but the only things which lags out is the preparation. Now comes to the some of the common queries which people are facing and lot of issues a lot of people are facing. एक बच्चा कहता है कि सर मेरा campus का पेमेंट का इशू आ रहा है, क्या करें? राइट, ऑफ कोर्स इफ यू आर फेसिंग अ पेमेंट इशू, यू हैव टू मेक अ पेमेंट अगेन व्हिच इज देयर, एंड स्टिल इफ यू आर फेसिंग एन इशू, आई हैव गिवन द ईमेल आईडी वेयर यू कैन ईमेल टू एन ICAI व्हिच इज देयर, राइट? दैट इज द वन थिंग व्हिच यू कैन गेट थ्रू, राइट? नंबर 2, सर मान लीजिए कि मेरा कोई पेमेंट का इशू आया है व्हिच इज देयर, तो ऑफ कोर्स ये रिफंड हो जाएगा. हाँ जी बेटा, रिफंड हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी रिफंडेड टू यू बाय द एंड ऑफ अ कैंपस व्हिच इज देयर, तो दैट इज गोना बी देयर, राइट? सर ये कहाँ पे डिटेल मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट? ये देखिए कैंपस का ब्रोशर है, इट इज देयर. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इफ यू कुड सी इट आउट हियर, राइट, इट क्लियरली मेंशन्स दैट योर पेमेंट विल बी रिफंडेड और प्रोसेस इन जुलाई 2026. है ना? अगर आपने कोई डबल पेमेंट कर लिया है तो जुलाई 2026 में आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, है ना? दैट इज वन थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू टेल यू आउट व्हिच इज देयर.
ऑफकोर्स कुछ लोगों को कुछ इश्यूज आए हैं कैंपस पोर्टल में फॉर्म में, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली ईमेल ऑन दिस, राइट, दिस इज अ डेडिकेटेड ईमेल, इस ईमेल पे आप प्लीज मेल कर दीजिए, ऑल्सो आई हैव गिवन दिस ईमेल आईडी व्हिच इज देयर, तो इस ईमेल पे आप कर दीजिए, तो योर आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम देयर, होपफुली आपका रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली यू ट्राई टू कनेक्ट विद समवन इन आईसीआई कमिटी व्हिच इज देयर, तो कमिटी लोग कहाँ मिलेंगे, ऑफ कोर्स यू सी द ब्रोशर विल बी एबल टू सी द कमिटी पीपल। सर और एक डाउट है सर, इस बार कैंपस जो होने वाला है, ऑफ कोर्स द कैंपस इज गोना बी फिजिकल कैंपस व्हिच इज देयर, right, but one thing you will be noticing in the campus brochure, and of course not in the brochure of course but in the list, some companies say that कि ठीक है आप physical करो but हम नहीं आ पाएंगे physical campus में, तो since ICAI has to bring more and more companies so that more and more people get placed, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है कुछ लोगों को कि इफ यू कुड सी दिस ब्रोशर, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव सेड दैट कि हम फिजिकल नहीं आएंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, वो बोलेंगे हम फिजिकल नहीं आएंगे, ऑल्दो वी विल कम टू द अहमदाबाद सेंटर बट वी विल बी टेकिंग अ वर्चुअल इंटरव्यू, राइट, और वी विल बी कमिंग टू द अहमदाबाद लोकेशन बट वी विल बी टेकिंग अ वर्चुअल इंटरव्यू। अब दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है, दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत यहाँ पे होती है कि देखो अहमदाबाद में एक कंपनी वर्चुअल इंटरव्यू ले रही है 16 को और सेम कंपनी एक फिजिकल इंटरव्यू ले रही है, और मान लीजिए दोनों कंपनी सेम डे पे है, तो आप यहाँ पे फंस जाते हो, बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे 2-3 जगह होगा विच इज देयर, जैसे कि चेन्नई में दिस कंपनी इज कमिंग फॉर अ वर्चुअल इंटरव्यू विच इज ऑन 11th, एंड इफ यू सी 11th को एक और कंपनी आ रही है दिस विच इज हैविंग अ फेस टू फेस इंटरव्यू, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम विच इज देयर। और इस केस में क्या करना, यू कैरी योर लैपटॉप, आप सभी से रिक्वेस्ट है लैपटॉप कैरी करना, ऑल्दो बिफोर यू आर गोइंग टू अ कैंपस आई विल बी अपलोडिंग अ डेडिकेटेड वीडियो, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, व्हाट ऑल थिंग्स टू कैरी, व्हाट ऑल थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर, ये सब मैं डालूंगा, बट उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, तब आ जाएगा मजा। तो ये एक चीज का दिक्कत हो सकता है विच इज देयर। नंबर 2, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कुड सी इट आउट हियर, जैसे कि काफी सारी कंपनीज में यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का डिटेल्स लिखा हुआ है, यू कैन सी इट आउट, तो कुछ कंपनीज लिख रही है जीडी नो 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 नो, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या फेवर क्या होता है, सेंटर में एक कंपनी देख रही है जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है एंड कंपनी वांट टू कंट्रोल द क्राउड, ऑल ऑफ अ सडन जहां पे नो लिखा है यस भी हो सकता है, तो जीडी का प्रिपरेशन ढंग से करके जाएंगे, बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज ऑन अ डे ऑफ एन इंटरव्यू कैन प्लान ऑफ अ जीडी विच इज है। सर एक और डाउट है, क्या वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं, yes walk in interview होते हैं in the campus days which is there, but again it is very subjective to the availability, to the timing which is there and lot of stuff। तो काफी बार क्या होता है कि एकदम से बोले कंपनी ने 2 बजे आ जाइए वॉक इन ड्राइव के लिए, मान लीजिए स्टूडेंट ही नहीं बचे, तो एकदम से स्टार्ट में कोई आया नहीं, जल्दी तो हो जाता है, या काफी में आखिरी बार 8 बजे 9 बजे या 7 बजे, राइट, विच इज देयर, मतलब जनरली इंटरव्यू टाइमिंग इज 9 to 6 which is written on the brochure, बट 5 बजे तक कंपनीज का वैकेंसी फिल नहीं हुआ, कंपनी बोलेगी चलो लेट्स डू अ वॉक इन ड्राइव, तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल गाइस, ठीक है। आ जाइए इस पे, सर नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे कैंपस में, जनरली द ब्यूटी ऑफ अ कैंपस इज 1 or 2 राउंड्स व्हिच इज देयर, कुछ कंपनीज 3 या 4 करती है, बट जनरली 1 या 2 राउंड में सट सिलेक्ट, मान लीजिए मेनी टाइम्स आई हैव सीन इन अ बिग 4 यू हैव ऑफलाइन 2 to 3 राउंड्स, बट ऑन कैंपस 1 राउंड ओनली, तो दैट इज गोना बी देयर, तो वो एक चीज रहेगा। नंबर 2, सर कैन आई टेक अ न्यू resume in the campus, मान लीजिए आप अपलोडेड वन CV in the portal, कैन आई टेक अ न्यू CV other than the one which I have uploaded in the portal, the answer is yes, राइट, कितने सीवीज ले जाना, क्या करना, वो सब चीजें मैं बता दूंगा, बट यस 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 विच इज देयर। नंबर 2, काफी सारे लोग जो है ना जो रेज्यूम्स बनाए हैं, प्लीज ढंग से बनाइए, formatting should be good, whichever domain you are targeting you should focus on that domain which is there, of course when you will get a shortlisting of a campus you will get to know for which role which location you have been shortlisted for and what is the CTC the company is going to be offering, तो तभी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा आपके लिए, तो आप प्लीज चैनल के साथ भी बने रहिएगा। of course if you are looking to prepare for a resume, right, we have also built out a dedicated AI tool through tools.cmong.com, यहाँ resume builder पे जाइए and you can just create your very nice resume which is there, राइट, आप एक शानदार सा बढ़िया सा मीठा सा एक रेज्यूमे बना सकते हैं, राइट, विच इज देयर, तो दैट इज समथिंग यू कैन प्रिपेयर फॉर, राइट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द सेम, ठीक है। तो इस बढ़िया सा एक टेम्पलेट दिया गया है, आप ट्राई करिए, वहां पे डेडिकेटेड वीडियो भी दिया है इफ यू वांट टू प्रिपेयर द सेम। नेक्स्ट कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, सर इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से रहेंगे फिक्स्ड विच इज देयर, देखिए 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे इसका तो आप ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिए, एंड ऑफ कोर्स एज एंड व्हेन द कंपनी शॉर्टलिस्टिंग कम्स विल हैव वन मोर वीडियो, बट हाँ कंपनीज के बारे में यू हैव टू रीस्टार्ट रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, सीईओ, सीएफओस, राइट, व्हाट इज देयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट रिसर्च ऑन द सेम, but please understand this 5 questions are very very important and crucial, which is going to be asked in every company interview, either going for off campus and off campus which is there, तो आपको पूछा जाएगा। नंबर 3, लास्ट थिंग बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो आउट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आप ढंग से हमें प्रिपेयर करवाइए, आप हमें इंटरव्यू के लिए मदद कीजिए, तो आवर नेक्स्ट बैच विच इज ऑफ कोर्स गोना बी अ लास्ट बैच बिफोर द कैंपस स्टार्ट्स, राइट, ये आखिरी बैच रहेगा विच इज अ 94th बैच विच इज देयर, तो विल बी कंप्लीटिंग अ 92 and 93 बैचेस बाय देन,
तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of March, 23 मार्च से चालू रही है मंडे से, राइट. द टाइमिंग विल बी इन मॉर्निंग 7 AM to 11 AM, which is there. The timing is going to be this. And of course, right, we'll be covering everything what is needed to get into a campus. So you can see what all things we'll be covering out here. So if you're interested and serious, what you can do, you can go to our website, which is cmong.com. जैसे आपके वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रेप सेक्शन में आपको मिल जाएगा डिटेल्स, which is there. Of course, कुछ फ्री रिसोर्सेज और मटेरियल यहाँ पे भी डले हुए हैं. If you're looking for a domain specific preparation, that is also there. तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द कैंपस और ऑफ कैंपस और एनी अदर स्टफ, डू कमेंट इट इन द वीडियो. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. बढ़िया से प्रिपरेशन करिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू जर्नी एंड प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट्स. ठीक है, चलो, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड डू नॉट फॉरगेट to check the files in the description. We have also uploaded a file related to the CMONG Samba placement program where we do a lot of placements and recruitment drives for you guys as well.